So let's start with the things out. What is allied angles is, we will do something like sine of 180 minus theta, sine of 270 minus theta, वैसा वाला questions. ऐसा वाला questions आपको करना आता है students? Can somebody tell me what is the answer for this? किसी ना कोई बोलो ना. Cos theta. Huh? Sine of 270 minus theta is? Vinti, tell me the answer. Cos theta. Cos theta. Wrong answer. But you tried well. Anybody who can tell the answer for this? Was it taught in physics? That I want to know. That's it. Nothing else. Was it taught in physics? Yes, sir. What is the answer? Minus cos theta. Minus cos theta. Minus cos theta. Okay. Let us do this first. This is the concept that I want to do. And whether you learned it in physics or not, people, please listen to me carefully. Okay. So we are going to do this. First of all. So, Aryan, tell me. sir, can you clear us that whether tomorrow there will be test or no? There will be test. I gave the paper. Yes, sir. I gave the paper. There is a test tomorrow. Sir, we were informed about some lectures also in the afternoon. I think we had. Like see, test तो ऐसे नहीं हुआ ना. Lectures का तो अभी तक, let's say there were. I know that it was informed earlier. Lectures might be there, but the final test, I think it is the test. I just got a message from Pooja ma'am. Key what? What is the message? You have a test tomorrow and attempt the test in the morning so that you can attend the lectures in the afternoon. Okay, might be possible. Might be possible. Okay. But the problem is that we were so confused and literally we have not studied about the test. Okay. Did you prepare for last test, Aryan? Yes. Same syllabus. You don't need to prepare anything extra. Syllabus didn't change. Then what changed from last week to this week? But sir, it was not quite well. What not quite well? Last week you prepared, na? Same syllabus, same thing. That's yes, all. Sir, but right? the test didn't went well, and it is the advanced level now. So we need to start. We have to study extra for it. What extra you study? Tell me, so, if you have 1 week, what extra? So we can do some extra sums and all. जो syllabus हुआ था last test, same. I don't think so. Anything is going to change with that. You're writing the test tomorrow. Everybody is writing the test tomorrow. This is your first advanced test. If you don't write this, then when will you write your advanced test again? Tell me. Next advanced test will happen after 1.5 months. Write this tomorrow. Whatever marks you get, you tell your parents the same thing, na? Like if you're concerned about marks, that parents are going to scold you. Did I scold you till now? You for like getting less marks? Then why to worry? Go and give the test. Whatever you prepared for last week, revise karo अच्छे से आप and write the test. That's all. Allied angles. Let us discuss this. See, we'll discuss something like sine of 270 minus theta, sine of 180 minus theta, cos of 180 plus theta. वैसा वाला क्वेश्चन हम करने वाले हैं. So how do we do it? अब ध्यान से सुनिएगा, पूरा इंफॉर्मेशन ध्यान से सुनिए. Now, this is 0 degrees because this is positive x-axis 0 degrees. When we take 90 degrees, when I rotate this 90 degrees, it will reach here. This is 180 degrees, 270 degrees. Again, when we come back to 360, we'll reach here again. Correct? Now, 360 plus 90, 450. 360 plus 180,
540, 630, 630 के बाद 720, करेक्ट ना? वैसा रोटेट होगा, करेक्ट ना? एनी डाउट इन दिस स्टूडेंट्स? No, sir. No. Okay, so let us start with this thing. How do I do it? अब देखिए, first of all, now take a small angle theta. Small angle theta, it doesn't matter if it is big angle also. I will explain you that later. Take a small angle theta. Imagine if I tell you 90 minus theta. 90 minus theta किधर लाई करेगा? कौन से क्वाड्रेंट में? See, quadrants का numbers है. ये first quadrant है, ये second quadrant है, ये third quadrant है, fourth quadrant है. इसमें कोई doubt है students? First, second, third, fourth. First quadrant. Now, 90 minus theta कौन से quadrant में लाई करेगा? 90 से theta subtract करना है, छोटा सा value subtract करना है. Subtract करने से first quadrant में आ जाएगा. Correct? Yes, sir. 90 plus theta कौन से quadrant में लाई करेगा? 90 से थोड़ा सा ऐड करना है. 90 इधर है, so 90 plus theta इधर आएगा. Similarly, 180 minus theta कौन से quadrant में आएगा? Second quadrant में. 180 minus theta. 180 से थोड़ा सा subtract किया. 180 को थोड़ा सा ऐड किया तो 180 plus theta किधर लाई करेगा? Third quadrant. 180 plus theta. Similarly, 270 minus theta भी इधर ही लाई करेगा ना? Yes. 270 plus theta will be lying in fourth quadrant, or 360 minus theta will lie in fourth quadrant, or 0 minus theta, which is minus theta, practically minus theta. 0 minus theta is minus theta. This also lies in fourth quadrant. 0 plus theta or 360 plus theta. 360 plus theta will lie in first quadrant. Any doubt? No, sir. Students, did you understand this? 90 Yes, minus sir. theta, 360 plus theta, 90 plus theta, 180 minus theta, 180 plus theta, 270 plus theta, 270 plus theta lies in fourth quadrant, 360 minus theta, all of them will lie in fourth quadrant. 360 plus theta will lie in first quadrant, 90 minus theta also will lie in first quadrant. इसमें कोई doubt है किसी को? No, sir. Okay, next. See, there is something which I don't know whether you know this. First quadrant में what is the formula that physics teacher told you? What is positive? Huh? All sine cos tan. All sine cos tan happen. उसके लिए कुछ कोड किया है, दिया है? No, sir. No. Okay. All students try coffee. Let's say, if I tell you this, all students try coffee. Sir, we can even make it as add sugar to tea. Add sugar Tea. to Coffee. coffee. Add sugar to coffee. Correct. All silver teacups. All students try copying. Or there are many things actually. I forgot. There are many things. Students used to tell me a lot of things in this. Okay. So all means everything is positive. Students, when I say S, in this sign is positive and sign ka relation is cosec theta. Cosec theta is positive. Sine and 1 by sine are positive. T. Try T stands for T. Theta. Tan and 1 by tan. 1 by tan cot theta. Coffee. So either Cos and cos sec. and sec are positive. Cos and 1 by cos. Anybody has any doubt? No, sir. First quadrant में everything is positive. Second quadrant में sine and 1 by sine are positive. Third quadrant में tan and 1 by tan are positive. Fourth quadrant में cos and sec are positive. You can remember it like this. All students try copying. All students try coffee. Or all students teach what? Maths. What? No. Chemistry. Chemistry. Okay, fine. You can say that also. Okay. Okay. Any doubt?
No, sir. So in this, what will I suggest you? Imagine I tell you sine of, okay, let's do the first question. Sine of 180 minus theta, थोड़ा सा बड़ा लिखता है, ये भी बड़ा नहीं है. Sine of 180 minus theta. आपके पास है, इसका आंसर लिखो. minus cos और theta. 180 plus theta लिखने का है आंसर. Minus आपको क्या क्या ऑब्जर्व करने का है? I'll tell you what are the things that you need to observe. The first thing, which quadrant this belongs to? That is the first thing you need to observe. कौन से quadrant वो belong करती है? Third. Third quadrant में ये positive या negative वो चेक करना है. Negative. ये positive, ये third quadrant है. Third quadrant में ये positive या negative चेक करने का है. Negative. So पहले आपको symbol लिखने का है. This is the first thing that you should write. Did you understand, students? Yes, sir. First, you need to observe which quadrant it is in. You said third quadrant, 180 plus theta. 180 plus theta में third quadrant में tan and cot are positive. Sin positive नहीं है. So sin negative है, so आप negative लिख लीजिए. हो गया? इसके बाद आपको observe करना है ये वाला चीज 180 minus theta. 180 कौन सा multiple है? 90 into what? 180 is 90 into what? 2. 2 even number है, odd number है, वो चेक करने का है. Even number है ना? हाँ. Even है तो आप सीधा sin theta लिख लो. Odd number है तो sin को cos बना, बस उतना नहीं. Is it clear, students? Sir, can you repeat the 180 part? हाँ. See, there are two things you need to observe. First is इसका quadrant. उसके बाद उसके quadrant से symbol decide होता है, plus or minus. उसके बाद 180 को चेक करना है. 180 is what multiple of 90? This is 90 into 2. Correct? If 2 is even number, we write sin as it is. Sin theta will write it. Otherwise, we will write cos theta. Odd number है तो cos theta लिखते हैं. You do understand? Yes. Okay. So let me write it in words so that you can copy. First of all, can you copy this? I'll write it in words after that. लिखिए, quickly लिखिए. Sir, Important है ये. Sir, we have to write this in a notebook or formula book. Notebook only, notebook. I'll tell you formula means I'll tell you. Okay, Write it sir. down. Sir, I did not understand which are the allied angles. Which is allied angle? I understood your, like, whatever you explained in the diagram, but what are allied angles? The heading is allied Allied angles. angle is 180 plus theta, 360 minus theta, O है. Okay. Write it down. I'll give you questions. We'll do questions. Are people writing it down? Yes, sir. Okay. Last class तक notes पूरा uploaded है. Okay. Videos also give me a day or two. I'll upload videos. Okay.
Done? Yes, sir. Yes. सर Huh? तो माइनस कैसे है साइन के लिए 180 प्लस थीटा में 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? और थर्ड क्वाड्रेंट में हाँ साइन हाँ समझा समझा ना? हाँ. Okay, let me write the theory on it. Since you wrote down, let me write it. Step 1. Check quadrant of angle and accordingly A double C na accordingly check whether this trigo ratio or this trigo function is positive or negative, and write the symbol. So the first thing that you have to write is the symbol, not the answer. That is the step 1. Always make sure you write that. Once you are correct with that, next you need to go for what function I should write. Step 2. Check the multiple of 90. Means, understood now? 180 plus is which multiple of 90 that you need to check. If it is even multiple, even multiple, then sine will remain as sine, cos will remain cos, tan will remain tan, cot will remain cot, sec will remain sec, and cosec will remain cosec. Odd multiple, तब क्या होता है? Sine will change to cos and cos will change to sine. Similarly, tan will change to cot, cot will change to tan, sec will change to cosec, cosec will change to sec. Any doubt, students? Students, any doubt? No. Write it faster so that we can do questions. Faster. Sir, written. Written, all of you? Yes, sir. Let's start with the problems. Now, problem 1. Sine of 360 degrees minus theta. 2. Cos of 180 plus theta. 3. Tan of 360 minus theta. 4th. Sine of minus theta. 5th. Cos of minus theta. 6th. Sec of
270 plus theta. 7th, cosec of 90 plus theta. 8th, cos of 90 plus theta. 9th, tan of 180 minus theta. Okay, and 10th, cos of 180 minus theta. Any doubt, students? Let's write down one by one. First, sine of 360 minus theta. Sin See, theta. wrong. First of minus all, sin theta. minus sin theta. minus sin theta. क्योंकि 360 minus theta कौन से quadrant है? 4. 4. Fourth quadrant. Fourth quadrant है sin positive या negative? Negative. Negative. Negative, and see 360 is 4 into 90, even multiple. So negative sin theta. 180 plus theta. कौन सा quadrant Minus है? cos theta. Minus cos theta. Third Minus. quadrant minus cos theta. Correct now? Third quadrant cos positive, sir, cos negative minus आएगा. 180 is even multiple, 90 into 2. Next, tan. Minus. 360 Minus tan. Minus tan theta. minus tan theta. Are you able to see anybody who's facing problem? Please ask me. I'll help you out. Minus tan theta. Next one. Minus sin theta. Minus sin theta. हाँ, sin is an odd function. आप sin से बाहर minus बाहर ले सकते हैं. और दूसरे वे क्या है ना? 0 minus theta is in fourth quadrant. I told you minus theta is in fourth quadrant. Negative आएगा. उसके बाद 0. See, 0 is कौन सा multiple? Even multiple. 90 into 0. 0 is considered as even number kind of. तो minus sin theta आ जाएगा. Any doubt? No, sir. Students, any No, doubt? sir. No, sir. Next, cos of minus theta. Cos theta. Minus. Theta. Cos theta. Fourth quadrant में positive है. Fourth quadrant में cos positive है. Next, sec of 270 plus theta. Minus Cos cosec theta. Cos theta. First of all, 270 plus कौन सा quadrant है? ये कौन सा quadrant है बताइए? 270 plus theta. Fourth. Cos theta. Fourth positive या negative? Positive. 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 So ये आ जाएगा positive. So plus sign only. And 270 is 90 into 3. 3. 90 into 3 is odd multiple. So Cos theta. sec theta. Sec will become cosec. Any doubt, students? No, sir. Now, cosec 90 plus theta. Next one. Sin theta. Sin theta नहीं है. Wrong. Sin is wrong. Sec theta. Sec theta. Correct. 90 plus theta. It will be positive. Correct. Any doubt? No, sir. Next. Cos of 90 plus theta. Minus sin theta. 90 plus theta second quadrant. Second quadrant में cos positive या negative? Negative. 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 And 90 is 90 into 1. So cos will change to sin. Negative sin theta. Tan of 180 minus theta. Minus tan theta. Minus. Minus cos theta. Minus cos theta. Minus tan Minus theta. tan theta. क्यों minus tan theta? 180 minus second quadrant है, negative 180. quadrant. Negative. 2 into 90. 180 is 2 into 90. Even number, tan will not change. Next. Cos of 180 minus theta. Minus cos theta. Minus cos theta. इसमें कोई doubt है students किसी को? No, no, sir. Let's go ahead. Find values of following. First one. Cos 120 degrees. Cos 240 degrees. Sin 120 degrees. And one minute. Cos 180 degrees. Sin 180 degrees. Sin 270 degrees. ये find out करते हैं. Cos 120 is what? We can always write as Minus root 3 by 2. 180 minus 60. Correct now? Can we write it like this?
Or do you want to write 90 plus 30? You can write down anything, not a problem. Answer will be same. See, cos of 180 minus 60 लिखता हूँ. 180 minus theta कौन सा quadrant है? 180 minus theta is second quadrant. Second quadrant में cos negative है. And theta, this is theta. Theta is 60 degrees. So, cos 60, answer is minus half. इसमें कोई doubt है किसी को? Students, इसमें किसी को doubt है? No, sir. Cos 240 degrees, tell me. Minus cos 270 minus 30. 270 minus 30, correct? You can write it like that also. Minus cos 30. Nah, minus sin 30. See, minus sin 30. this is minus sin 30. 270 minus theta is third quadrant. Third quadrant में negative है. 270 is multiple of odd multiple. 270 is 90 into 3. So minus sin 30 हो जाएगा. This is minus half. इसमें कोई doubt है किसी को? No, sir. Student, इसमें कोई doubt है किसी को? No, sir. Next one. Sin of 120. Root 3 by 2. Root 3 by 2 कैसा आया था? सर 90 plus 30 होगा तो वो cos हो जाएगा. अच्छा ये फिर कर सकते हैं. हाँ ये भी कर सकते हैं. Sin of 90 plus 30 करते हैं. Sin of 90 plus 30 is? तो sin positive होगा तो cos of 30. See, wait. All of you, are you understanding this? Anybody who is facing problem? Yes, sir. No, sir. सेकंड वाला और एक बार समझा सकते हो? क्या? सर माइनस cos 60 इसमें है और सेकंड में माइनस sin 30 क्यों? अरे 270 is odd multiple. इधर थीटा क्या है? 30 डिग्रीज. 30 सीधा आ जाएगा. थीटा तो आने वाला है. Odd multiple है तो cos will become sin, sin will become cos. Even multiple है तो same function आ जाएगा. ओके सर. इधर 90 is 90 into 1. Odd multiple है. So straightforwardly say odd multiple है तो change होगा. Sin becomes cos. And 90 plus 30 is second quadrant. Second quadrant में sin positive है. So plus cos 30. Understood? And cos 30 का value is root 3 by 2. इसमें कोई doubt है students किसी को? No, sir. Okay, cos 180 degrees. Tell me. 1. Cos 180 degrees is what? Minus 1. Minus 1. आपको आप इसको कैसे लिखना है ना? See, cos of 180 plus 0 लिखिए. And third quadrant consider करो. Not a problem. Answer is going to be same. 180 plus theta is supposed to be third quadrant. Third quadrant में cos negative है. So आपको minus cos 0 आनी चाहिए. थीटा की जगह 0 है. Minus cos 0 आनी चाहिए. Cos 0 is 1. So minus 1. Any doubt, students? No, sir. Similarly, आप sin 180 फाइंड आउट करके आंसर बताइए. 0. Sin 180 is 0. कैसे करना है? Sin of 180 plus 0. That is third quadrant minus sin 0. But sin 0 तो 0 ही है. 0. Similarly, sin 270 फाइंड आउट करो. You can write it as sin of minus 1, correct. Sin of 270 plus 0. 270 plus 0. आपके थीटा की जगह 0 है. 270 is odd multiple. So and fourth quadrant sin is negative. Odd multiple है तो cos 0 बन जाएगा. Minus cos. Anybody has any doubt in this, students? No, Students, sir. any doubt? आपके फॉर्मूला लिस्ट में लिखिएगा. Add them in the formula list. Cos 2 pi by 3 is equal to cos 4 pi by 3 is equal to minus half. Sin pi equal to sin 2 pi equal to 0. Cos pi equal to minus 1. Cos 2 pi is equal to plus 1. And also one more thing. Trig of 2 pi plus theta is trig theta. Let me explain you. First write down this. Formula list में लिखो.
See cos 2 pi by 3, cos 120 degree. 2 pi by 3 is 120 degrees. 120 degrees बहुत सारे बार आता है. Okay? It will come a lot of times, cos 120 at least. इसलिए I'm asking you to remember that. Cos 120 is cos 240, they'll always come. Similarly, cos 180, sin 180, cos 2 pi, sin 2 pi, बहुत बार आता है. Similarly, sin 270, that is -1. Cos 270 तो 0 है. These generally come a lot. That's why I'm asking you to remember rather than finding at that time. Students, write it down. And trig of 2 pi plus theta is trig theta. उसका मतलब समझाओ. Sir, this can be used for any value. This can be used for Any value. correct. Anytime sine of 180 360 plus theta है, you will get it as sin theta only. हमेशा आपके एंगल से एक 360 रिमूव कर सकते हैं. For example, if I ask you what is tan of 1050, okay, इसमें से आप 360 रिमूव करते जाइए, आंसर विल नॉट चेंज. ओके, 360 इंटू कितने बार रिमूव करता हूं आप देखिएगा. 360 इंटू 2 इज 720, राइट. आप 720 रिमूव करिए, इससे क्या आता है? tan ऑफ 720 रिमूव किया तो क्या आता है? 330 आता है. 330. करेक्ट ना. और 360 रिमूव करो. 360 तो है ही नहीं, सो रिमूव करने से क्या आएगा? -30 आएगा. करेक्ट स्टूडेंट्स, करेक्ट. tan of Yes, -30 but minus tan 30, आपका आंसर है -1/√3. कभी भी आपके एंगल से 360 निकाल सकते हैं, 360 ऐड भी कर सकते हैं, आपका आंसर चेंज नहीं होगा. एनी डाउट स्टूडेंट्स? एंगल को 360 क्योंकि एक रोटेशन हो जाएगा ना तभी. सी इफ यू लुक एट इट, sin 30 ये 30 है. इमेजिन आप एक पूरा रोटेशन करने के बाद ये एंगल क्या होता है? 360 + 30 उधर ही आएंगे. Yes. सिमिलरली वन मोर रोटेशन किया, 720 ऐड किया, मीन 2 रोटेशन आने के बाद उधर ही आते हैं फिर से. करेक्ट ना. एंगल इज गोइंग टू रिमेन सेम. लिखिए क्विकली. ये भी लिखना है tan 1050 में ना. हाँ, ये लिखना है tan 1050 का. tan 1050 लिखना है क्या वो भी? I didn't understand. No, it is not. No, not required. See, formula list में सिर्फ a box लिखो, बस उतना ही. Let's go ahead, students. Yes, sir. Okay, 1 minute. Let me open my Trigo notes. Yeah, I'm there. 1 minute. I'm just opening my notes. Just a minute. Sir, I want to ask something. Yeah, ask. Sir, when you're doing papers and all, how can we reduce the writing part of the solution? Huh? How can we reduce the writing part of the solution by solving paper? Nothing. When you make a habit, see, when you make a habit of skipping steps, then your writing part will reduce. That is a good thing when it comes to entrance examinations. If you observe now, when I solve questions with your seniors, like especially 12th standard mein, not seniors ka any role nahi, like when you come to 12th standard, it will happen to you also. I skip a lot of steps with understand. Logical.
But now I don't do that with you people because you people are still doing things. ये भी नहीं है, एक मिनट. आपको डिफरेंशिएशन उतना नहीं आएगा. I'm not getting the right example to show you. Maybe this is not the right chapter. I don't write all the steps. When I, क्योंकि like मेरे को कुछ steps obvious हैं. Like how do I tell it? हाँ मतलब अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका स्प्लिट द मिडिल टर्म बहुत आसान है तो वो एडिंग वगैरह दिखाने का जरूरत है. Not only that, like it's means I see generally what students do is any simplification is there, they do one at a time. You have to solve each, you have to write every step with multiple results. Let's say, not getting the right question. Okay, fine. I'll do this. 3 into sin x minus cos x whole raised to 4 plus 6 into sin x plus cos x whole square plus 4 into sin raised to 6x plus cos raised to 6x. Imagine if this question is there. Okay. If I do this question, how do I do it? अब देखो. See, इसका simplification क्या है? Like if I do it sin square plus cos square, I don't write that. If I do it sin square plus cos square, see क्योंकि whole square करता हूँ, sin square plus cos square, which is 1 minus 2 sin square cos square का whole square. ये मेरा पहला step है. Plus 6 times, what is the expansion of this? Sin square plus cos square 1 minus 2 sin square cos square. Sorry, plus 2 sin square cos square. Yes or no? Yes, sir. Plus 4 times, इसका फॉर्मूला मैंने बाहर करने के लिए बोला 1 minus 3 sin square x cos square x. Correct? Yes, sir. Yes. इसमें कोई डाउट है? No, sir. कुछ तो गलत हुआ. Sir, ये Sir, it is sin 2 x sin minus cos x sin लिखा ना x आपने. cos x. हाँ? Sir, sin 3 x into 1 minus minus 2 cos sin x. x cos Sorry. x. Either sin x cos x. Correct. Sin x cos x. Now I'll expand it. Expansion is what? This is 3 times 1, 3 times 4 sin square x cos square x, that is 12 sin square x cos square x minus 3 into 2. इधर भी sin x cos x है. 3 into 2. 3 into 2 into 2, that will be 12 sin x cos x. Plus 6 plus 12 sin x cos x plus 4 minus 12 sin square x cos square x. ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा. Answer is 13. See, when you are simplifying, you have to simplify every step, means every part in one go. You're not supposed to do one of them and write everything else mechanically. Always look for cancellations. That is another thing. And try to simplify some part on your own in your mind and write it. While writing it, you write the simplified version. Like basic sin square x plus cos square x is 1, right? Like that. After a point of time, you will be skipping 2 steps. Miss 2 obvious steps and writing down the next question, next step. उससे आपका स्पीड भी ज्यादा होता है और सेकंड थिंग आपका कैलकुलेशंस भी करना बहुत ही आसान हो जाता है. अंडरस्टूड? दिस इज वन थिंग यू ट्राई टू मेंटेन इट. उससे एक ही प्रॉब्लम है, जब सब्जेक्टिव एग्जाम होगा आपको स्टेप्स लिखने के लिए आगे लगना पड़ेगा. मतलब वो ऐसे एग्जाम लिखना पड़ेगा. वो तो प्रीलिम्स कंडक्ट करेंगे एंड सब्जेक्टिव टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे उसके लिए, बट ऑब्जेक्टिव के लिए ये सीखो थोड़ा सा, like a habituated bano iska. Okay, till 10th you don't have that habit, I know. Okay, let's do the question, students. First question.
cos pi by 7 plus cos 2 pi by 7 plus cos 3 pi by 7 plus cos 4 pi by 7 plus cos 5 pi by 7 plus cos 6 pi by 7. ये आपका क्वेश्चन है. How do I solve it? Now, what do I do now? If you observe this angle and this angle, what is the relation between them? Relation between them is addition of them. Pi by 7 plus 6 pi by 7 is nothing but 7 pi by 7, which is pi. LCM is नीचे 7, numerator में भी 7 pi है. Pi, correct? Yes. So, can I write cos 6 pi by 7 as cos of pi minus pi by 7? Pi is 180 degrees, correct now? Cos of 180 minus theta is what? Second quadrant. 180 minus theta is second quadrant. Cos negative, even multiple. So minus cos pi by 7 आ जाएगा. इसमें कोई doubt है? No, sir. Similarly, इसका addition और इसका addition is also pi. Sir, I didn't understand why minus cos pi by 7. अरे pi is 180 degrees. 180 degrees is 90 into 2. 180 minus theta कौन सा quadrant है? 180 minus theta, second. Second quadrant. Cos positive या negative? Positive. अरे देखो ना. Negative. Negative से negative आया था. And 180 is even multiple. 90 into 2. So cos आ जाएगा बस फिर से. Step 1, step 2 लिखा ना, वही अप्लाई कर रहा हूँ मैं हमेशा. Similarly, cos, see, if you look at it, 2 pi by 7 plus 5 pi by 7 is also pi. 7 pi by 7. So cos 5 pi by 7 को लिख सकते हैं. Cos of pi minus pi by 7. Sorry, pi minus 2 pi by 7. This is minus cos 2 pi by 7, exactly for same reasons. Second quadrant, negative, even multiple of 90. Similarly, cos 4 pi by 7 is cos of pi minus 3 pi by 7. अभी देखेंगे तो ये दोनों भी एडिशन इज 180 माइनस cos 3 pi by 7. So आंसर क्या होगा स्टूडेंट? सम ऑफ 0. Any doubt? Students, any doubt? No, sir. No, sir. Let me give you the next one. Find sine 24 degrees plus sine 32 degrees plus sine 204 degrees plus sine 212 degrees. Exactly same way. Exactly same way. आप 204 को सिंप्लीफाई करने के लिए कोशिश करो. Sine of 204. What is this? 180 plus 24. 180 plus 24. Correct. Now 180 plus theta. कौन सा quadrant है? Third. Third quadrant. Negative आएगा. Sorry, sin है. Negative आएगा. Negative. हाँ. Third quadrant sir. and negative. Now 180 plus theta is कौन सा multiple? Even number or odd multiple? Sin का. Even. 180. Even. Even. So sin ही आएगा and theta की जगह 24 है. So 24 is. Any doubt? Students, any doubt? Now tell No, me sir. sin 212 degrees. इसको कैसे लिखने का है? 180 plus 20. Plus 32. 32. 180 degrees plus 32. कौन से quadrant में है? Third. Third. Third quadrant. Negative ही आएगा. Sin 32. 32. Correct ना? Answer again? 0. Any doubt, students? No, sir. 0 कैसे है? अरे addition of all of them ना. This is this. This is this. Sorry, reverse. This is this. This is this. Replace करो. Answer क्या आएगा? हाँ 0. Next. तीसरा वाला. ABCD is a cyclic quadrilateral.
ABCD is a cyclic quadrilateral. Then find cos A plus cos B plus cos C plus cos D. Find out करो. Cyclic quadrilateral में condition क्या है? Opposite angles supplementary. The sum of opposite angles is 180. Sum of opposite angles is 180. Correct. They are supplementary. Correct. So, which will be opposite angles? AC and BD. AC and BD. Correct now? So, angle A plus angle C is 180 degrees. Similarly, angle B plus angle D is also 180 degrees. Correct now? Now tell me, can I write angle A is equal to 180 minus C? Yes. हमें cos A चाहिए. Cos A क्या है? Cos of 180 minus C. What is 180 minus C? Tell me. Cos of 180 minus theta. Sir, cos A Minus cos. minus cos A. Minus cos C. Correct. So आपका cos A plus cos C क्या बनता है? 0. 0. Similarly, आप B is equal to 180 minus D लिख सकते हैं. Cos B is cos of 180 minus D. 180 minus D second quadrant, even multiple. So negative cos D, cos B plus cos D is 0. इसमें किसी को डाउट है? स्टूडेंट्स इसमें किसी को डाउट है? फोर्थ क्वेश्चन. If theta equal to pi by 21, find sin 23 theta minus sin 7 theta upon sin 2 theta plus sin 14 theta. इसको कैसे कर देगा? Shall we do? Theta is pi by 1. Find sin 23 theta minus sin 7 theta upon sin 2 theta plus sin 14 theta. How do we do this? What will we do now? See, theta is pi by 21. Can I write 21 theta equal to pi? Do you agree with this? yes sir. Yes, sir. Now, what will we do is sin 23 theta का simplify करेंगे. Sin 23 theta is what? Sin 21 theta plus 2 theta and 21 theta को आप pi लिख कर सकते हैं. 21 theta is pi, 2 theta. Correct ना? What is pi is 180. See, remember this. Pi is 180 degrees. Sin of 180 plus 2 theta. 180 plus कौन सा quadrant है? Minus. Third quadrant sin negative. Correct ना? So minus आएगा sin. क्या मिलेगा? 2 theta. 2 theta. Correct. Now similarly sin 14 theta को simplify करेंगे. नीचे जो sin 14 theta है. क्या आएगा sin 14 theta के लिए? Sin of Sin 21 minus 7 theta. 21 theta minus 7 theta. 21 theta को आप लिख सकते हैं pi. Pi minus 7 theta is what? Minus sin 7 theta. Okay, sin 180 minus. 180 minus is कौन सा quadrant? Second. Second. Second quadrant. Second quadrant में positive. So sin 7 theta बन जाएगा. Any doubt? Now let us replace them in the question. Question में हमें चाहिए sin 23 theta minus sin 7 theta upon sin 2 theta plus sin 14 theta. इसको नीचे as it is लिखिए sin 2 theta plus sin 14 theta. Numerator में लिखिए minus sin 2 theta minus sin 7 theta. Denominator is 14 को लिख सकते हैं 7 theta. Correct? न्यूमरेटर से माइनस कॉमन करने से कैंसिल हो जाता है. Yes, sir. स्टूडेंट्स, Yes, sir. these two will get answer is -1. Any doubt? No, sir. All of you understood this?
Okay, next one. X equal to sine 130 degrees plus cos 130 degrees. Check whether x is positive or negative or zero. So हमें check करना है positive या negative. Let's start. How do we start it? Breaking it down. Correct. So how do you break it is write 130 as 90 plus 40. Correct enough? Yes, sir. So x is equal to sin 130 को लिखते हैं 90 plus 40. Cos को लिखते हैं 90 plus 40. अभी बताइए 90 plus 40 कौन से क्वाड्रेंट में है? Second. Second. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव या नेगेटिव? Positive. कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. तो बीच में नेगेटिव साइन आएगा. करेक्ट. cos of 90 plus theta, cos of 90 plus theta is minus sin theta, so minus sin 40 आ जाएगा, ये cos 40 आ जाएगा. Do you agree with this, students? Yes, sir. Yes, sir. Now tell me whether it is positive or negative. How do you know it, right? That's the question. Positive. How do you know it's positive or negative? Sir, I took the closest value of theta, which I know. Like, I took Is 45. 45. हाँ, anything, yeah. 45 पे दोनों equal है. Sir, zero. Zero नहीं है. Positive. Answer is positive. क्यों? अब देखिए x is positive. क्यों मैं बताता हूँ, देखिएगा. See, आप ऑब्जर्व करो, ट्रेंड ऑब्जर्व करो. 0 degrees, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees, 90 degrees. साइन थीटा और कॉस थीटा का ट्रेंड ऑब्जर्व करो. साइन थीटा का वैल्यू क्या है? 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1. कॉस का वैल्यूज क्या है? 1, √3/2, 1/√2, 1/2, 0. साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रही है? साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रही है. कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो रही है? कॉस थीटा का वैल्यू डिक्रीज हो रही है. करेक्ट ना? Do you observe that, students? Yes, So sir. at 45 दोनों इक्वल है. मतलब क्या है? 45 के पहले sin थीटा is obviously less than cos थीटा. 45 के बाद sin थीटा is greater than cos थीटा. और 45 पे sin थीटा is equal to cos थीटा. करेक्ट ना? I'll write it in reverse. Yes, Cos theta is greater than sin theta. इसमें कोई डाउट है किसी को? Overall trend of sin x and cos x. Later we'll study graphs. We'll be clear with the graphs. So x is positive. Do you have any doubt in this? Students, do you have any doubt? No, sir. All of you are clear, right? Yes, sir. Let's go ahead. So cos 40 is before 45. Before 45 cos is greater. So cos minus sin is positive. So x is positive. अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. If x is equal to cos 2π/3 into y is equal to cos 4π/3 into z, prove that xy plus yz plus zx is equal to 0. Okay? Let's find it. आप एक बार वैल्यूज टेबल मींस फॉर्मूला लिस्ट देख के मेरे को cos 2π/3 cos 4π/3 का वैल्यू बताओ. Cos 120 is minus 1/2. And cos 240 Minus 1/2. cos 240 क्या है? Minus 1/2.
-1 दोनों -1/2 है स्टूडेंट्स, yes or no? Yes. Yes, sir. So x is equal to -1/2 into y is equal to -1/2 into z, करेक्ट? दोनों का वैल्यूज लिख लिया. अब मेरे को सी मैं सारा इक्वेशन को आई विल मल्टीप्लाई विद -2. सो कैन आई राइट -2x इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया, माइनस भी कैंसिल हो गया, y इक्वल टू z. कैन आई राइट लाइक दिस स्टूडेंट्स? Yes, sir. अभी आप बताइए xy plus yz plus zx क्या है? x is x only, y is -2x, y is -2x, z is -2x, z is -2x, x is x. बताइए आंसर क्या है? -2x स्क्वायर -2x इंटू -2x 4x स्क्वायर -2x स्क्वायर, करेक्ट ना? यही आएगा. Yes, sir. आंसर क्या है स्टूडेंट्स? 0. 0. 0. 0. All of you understood now? Students, all of you understood? Yes, sir. Yes, sir. Next. Find square root of 1 minus sine square 100 degrees into sec 100 degrees. ये आपको सॉल्व करके मेरे को आंसर बताना है. सॉल्व करो. Sir. Sir, हाँ. is the answer 1? No. It looks so much obvious to be 1, but it is not a 1. We'll discuss that. Any other answer other than 1? I want to hear your explanation also. Answer is not 1. I know most of you are going to get 1 because you are doing one mistake, which everybody do. Anybody got answer other than 1? Students? Anybody? People? Yes, sir. Answer? Okay. Answer is -1. अभी मेरे को आंसर बताइए कैसे आएगा, आपको सर्च करना है. Answer is -1. Hint is in your formula list. Answer is -1. You can come up with the explanation and tell me the answer. Shall I discuss? Yeah. See, root of 1 minus sine square is cos square. There is no doubt about that. Into sec 100. मैंने फॉर्मूला लिस्ट में एक चीज दिया है, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर कभी भी आता है, आपको कॉस नहीं लिखने का, गलत है वो, मॉड कॉस लिखने का है. Did I mention this? Yes. हाँ, अभी बताओ मॉड कॉस 100 डिग्रीज लिखता हूँ, लाइक इफ आई राइट मॉड कॉस 100 डिग्रीज, पहले कॉस 100 पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे बता सकते हैं? हमें चाहिए कॉस 100 नेगेटिव या पॉजिटिव. कॉस 100 डिग्रीज कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 से ऊपर है, Second. 180 से नीचे है, सेकंड क्वाड्रेंट. सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative.
नेगेटिव, सो कॉस इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट. सो आप इसको तो cos 100 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इफ यू राइट लाइक दिस देन यू आर राइटिंग मॉड्यूलस एज ए नेगेटिव वैल्यू. मॉड्यूलस तो कभी नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं. cos 100 लिखते हैं तो आप गलत लिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स. मॉड्यूलस ऑफ एनी नंबर कभी नेगेटिव नेगेटिव आता है बाहर? नहीं सर. सो क्या आएगा आपको? 4 आएगा ना. यस सर. सो cos 100 आप सीधा लिखते हैं तो आप गलत लिख रहे हैं. cos 100 इज ए नेगेटिव क्वांटिटी क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है वो. सो व्हाट वी आर सपोज्ड टू राइट? वी आर सपोज्ड टू राइट माइनस cos 100 minus cos 100 degrees into sec 100 degrees. Cos and sec are reciprocals of each other. Answer is -1. कुछ लोग सोचते हैं कि सर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो सर मॉड से माइनस कैसे आया? माइनस नहीं आनी चाहिए. नो, आई रोट पॉजिटिव वैल्यू ओनली. सी टुगेदर इट इज पॉजिटिव. cos itself is a negative value. आप इसको माइनस से मल्टीप्लाई करने से वो पॉजिटिव होगा. स्टूडेंट, डू यू अंडरस्टैंड इट? सर तो मतलब वो पहले से ही नेगेटिव वैल्यू था. हाँ, it is negative value. You multiplied minus to make it positive. Did you understand? Okay, sir. Yes, sir. Anybody has any doubt? Students, anybody has any doubt? No, sir. Okay. Sir, can you explain the last step? Which one? Minus cos 100. See, mod हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है. वो पक्का ट्रू है. Yes. So cos 100 is a negative number क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव है. तो नेगेटिव नंबर को मॉड्यूलस से पॉजिटिव कैसे बने? माइनस से मल्टीप्लाई करो. See, another way of writing mod of -4 is minus of -4. जो नंबर अंदर है नेगेटिव नंबर उसको एक्स्ट्रा माइनस से मल्टीप्लाई करो, वो तो पॉजिटिव होने वाला है. वही मैंने किया था. cos 100 ओरिजिनली नेगेटिव नंबर है, उसको माइनस से मल्टीप्लाई करने से वो पॉजिटिव बन जाएगा. लोग सोचते हैं कि ये माइनस चले जाएगा. एक्चुअली माइनस चले, लाइक माइनस विल नॉट डिसअपियर. Extra minus will get multiplied to it and becomes positive. Understood? No? Anybody has any doubt? No, sir. Everybody is clear? Sir, Yes. हाँ. sir, sec 100 degrees will also be negative, right? Seconded is negative, but seconded को mod नहीं है. Okay. Seconded को mod होता तो different story है altogether. Seconded को mod नहीं है, so इसलिए it is coming as it is. Okay, sir. और मैंने बेसिक मैथ्स में एक चीज बताया था आपको, रूट हमेशा पॉजिटिव होता है. करेक्ट स्टूडेंट्स? बेसिक मैथ्स में मैंने पढ़ाया था रूट हमेशा पॉजिटिव होता है. Yes, sir. एंड sec 100 इज अ नेगेटिव क्वांटिटी. जो आंसर आनी चाहिए आप लोगों को नेगेटिव आनी चाहिए. डिफॉल्ट +1 तो गलत आंसर है. बाय लुकिंग एट इट आई कैन से इट +1 इज रॉन्ग आंसर. Did you understand, students? Yes, sir. Let's go for next question. Next question is nice. But उसके पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. sin 1 degree. Which one is bigger? Sin 1 degree. क्यों? Because it may be that sin 1 has another value. What is 1 means? 1 radian. 1 radian. Correct. 1 radian means कितने डिग्रीज है? 180. 1 radian means कितने डिग्रीज है? 53 point. हाँ, आप थोड़ा सा 57. एडिट करिए ना, उसको लिखिए 57.32 डिग्रीज. 1 सेकंड ना, जस्ट 1 मिनट.
Correct only. What did I give? 57.29, right? Yes, sir. Yes, sir. It's correct only. Maharashtra board textbook mein it is given wrong. Maharashtra board textbook mein it is given as 57.32 degrees. But Google search says that 57.29 is correct. I don't know what they did in calculation. Okay, that's okay. Correct only, not a problem. Sine 1 and sine 1 degree. Which one is bigger, students? This is nothing but sine 57.29 degrees. This is sine 1 degree only. Which one is bigger? This is bigger because sine increases its value 0 to 90 mein. Correct now? Did you understand? Yes, sir. Let me Yes, give sir. you another question which is related to radians only. See, default जो मैंने बोला था ना डिफॉल्ट बेस लॉग का ई है वैसा डिफॉल्ट मेजर ऑफ एन एंगल इज रेडियंस मैथमेटिक्स में कभी भी आपको डिग्री मेंशन नहीं करता है मतलब वो रेडियंस है डिफॉल्ट है वो डिग्री नहीं लेने का है सो अरेंज फॉलोइंग इन ascending order cos 1 cos 2 cos 3 करिए सर जो ऑर्डर है उसी में हाँ नहीं cos 3 पहले आता है cos 3 पहले आती है क्यों they are radians not degrees I did not mention anything so radians है वो सेम ऑर्डर no you need to check first now first cos 1 क्या है is cos 57.29 degrees correct correct students Yes, sir. now cos 2 क्या है Cos 1 into 2. no cos 2 is cos 2 times 57.29 degrees 2 times 57 is what 114. 114. huh 114. 114. 114 degrees correct 114 कौन सा क्वाड्रेंट में है Second. second quadrant में so this is approximately 114 okay 114.5 not a problem इसको आप लिख सकते हैं 90 plus 24 degrees correct ना approximately Yes, sir. Yes, sir. so that is minus sine 24 Yes, sir. Yes. okay now let's talk about third one cos 3 is what cos of 3 times 57.29 degrees that is 3 7s are 171. 171. 171 degrees correct now this is cos of 90 degrees plus 81 degrees which is minus sine 81 correct ना students Yes, sir. आप देख सकते हैं सी cos 1 is a positive value first quadrant का angle so cos 1 is the largest because बाकी दोनों negative हैं correct ना so cos 1 is the largest और बाकी दोनों में सी साइन अब माइनस हटा के एक बार सोचो साइन 24 ग्रेटर है साइन 81 ग्रेटर है Sine 81. 81. sin 81 is greater when I multiply with minus it will become reverse sin 24 will become greater Yes. correct na students Yes. so cos 2 will be below what and cos 3 will be here any doubt No, sir. No, sir. any doubt students No, sir. next question let me give you the next question
if root, sorry ना, red color में लिखते हैं, if root sin x plus cos x is equal to 0, find sin x. Don't say minus cos square x, that's going to be wrong. We need to find the value of it. सर एक इक्वेशन में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डालेंगे तो उसमें क्या चेंजेस होएगा? कौन सी इक्वेशन में? अगर हम ये लेंगे 3 is greater than 2 और उसमें cos अप्लाई करेंगे तो क्या होएगा? Depends upon values. Depends upon values. कभी कभी वो पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, रिवर्स भी हो सकता है. डिफॉल्ट नहीं है, सबके लिए ट्रू नहीं है वो. Okay sir, thanks. Trigonometry functions are wavy functions. In fact, all waves in physics are represented by trigonometric functions, sine or cos. Okay, later you will learn that. Even chemistry में भी आएगा, trigonometric में भी आएंगे functions, wave functions. Shall I do it? Yes, sir. Okay. So, what will happen? So all we know is, see, by default sin x is root के अंदर है, correct ना? Sin x root के अंदर है. Sin x has to be positive or greater than or equal to 0. Otherwise it is not possible क्योंकि root के अंदर negative तो आ ही नहीं सकता. So root sin x is equal to minus cos x. अब square करिए दोनों तरफ. Sin x is equal to cos square x. Now आप sin x is equal to cos square x को लिख सकते हैं 1 minus sin square x. दोनों के इस तरफ लाइए. Sin square x plus sin x minus 1 equal to 0. अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. So sin x का वैल्यूज क्या आएंगे? रूट्स minus b plus minus square root of b square minus 4ac. 4 into minus 1 upon 2a. So sin x का वैल्यू आएगा minus 1 plus minus root 5 upon 2. Any doubt students? अभी देखेंगे इसका वैल्यूज. -1 minus root 5 by 2. ये तो रिजेक्टेड है डायरेक्ट. sin x नेगेटिव है
और इनफैक्ट रिजेक्टेड फॉर मेनी रीजंस, नॉट ओनली फॉर नेगेटिव. इसका वैल्यू देखिए -1 -2 पॉइंट समथिंग बाय 2 -3 पॉइंट समथिंग, दैट इज -1 पॉइंट समथिंग. -1 से नीचे, see sin x should lie between -1 and 1. For that reason also it is rejected. Correct now? Yes, sir. दूसरा रूट क्या है? दूसरा रूट is -1 plus √5/2. I think this is valid because √5 is 2 point something, 2.2 something, -1/2. 1.2/2, 0.6. Valid answer है approximately. Correct ना? See, आपका sin x वैल्यूज आएंगे ना, sin x का cos x का, वो हमेशा -1 to 1 के बीच में होनी चाहिए. नहीं होंगे तो डिलीटेड है, वो आंसर नहीं है आपका. एनी डाउट स्टूडेंट्स? ये आपका आंसर है. लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, करिएगा. रूट ऑफ 1 plus sin a upon 1 minus sin a is equal to sec a plus tan a. Find quadrant of a. सॉल्व करिए क्विकली. ये तो 10th स्टैंडर्ड में है. सॉल्व करिए. नॉट द एंटायर क्वेश्चन, ओनली द फर्स्ट पार्ट. Sir, solved it. आंसर सर सेम ही आ रहा है. फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया, क्वाड्रेंट ढूंढना है ना. ओके. फर्स्ट क्वाड्रेंट आंसर देखते हैं. सी, आपने क्या किया? फर्स्ट ऑफ ऑल, first step, default step 10th standard students think is, when I ask them what you should do, they'll say rationalization, sir. They'll take LHS and they'll say rationalization, and some suggested squaring on both sides also. That's a very bad idea. Rationalization is a very good idea. Squaring on both sides क्यों bad idea ना? जो चाहिए पॉजिटिव या नेगेटिव इंफॉर्मेशन वो चले जाते हैं स्क्वायर करने से दोनों तरफ. करेक्ट ना? इसलिए बैड आइडिया वो. अभी इसका सोचते हैं. एक्चुअली न्यूमरेटर का नहीं, फर्स्ट में नहीं है सर. न्यूमरेटर का, सॉरी, डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है. सो लेट्स रैशनलाइज. वेट आ रही है. स्क्वायर रूट ऑफ 1 plus sin a होल स्क्वायर अपॉन नीचे 1 minus sin square a आएगा. करेक्ट? व्हाट इज 1 minus sin square a? cos square a. cos square a 1 plus sin a होल स्क्वायर, ये आएगा. अभी क्या लिखना है? अब बताइए क्या लिखने का है? mod of 1 plus sin a upon cos a. करेक्ट. mod of 1 plus sin a upon cos a, ये लिखने का है. अभी mod हटाने के लिए, सी, if I look at it this way, this is sec a plus tan a. ऑब्जर्व करो, लेकिन इसको आप लिख सकते हैं 1 by cos a sin a by cos a. ये तो sec a, ये तो tan a. mod हटानी चाहिए. mod कब हटा सकते हैं हम? जब अंदर की चीज पॉजिटिव है तो तब हटा सकते हैं. करेक्ट ना? अदरवाइज माइनस से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. स्टूडेंट्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. So now we will study about what is inside. What is inside? Mod of 1 plus cos a, 1 plus sin a upon cos a. इसको क्या करेंगे ना, मैं इसको लिख लेता हूं, न्यूमरेटर को बाहर लेके आता हूं बाय डिनोमिनेटर mod cos a. क्यों? See, sin of anything, I told you it lies between -1 and +1. करेक्ट ना? थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं. -1 को इस तरफ लाइएगा, ये वाला -1 को इस तरफ लाइए, क्या आएगा? 1 plus sin a is greater than or equal to 0. हमेशा ये पॉजिटिव है. न्यूमरेटर वाला तो पॉजिटिव ही है. सो वी डोंट हैव टू वरी, ब्रिंग इट आउटसाइड. जो डिनोमिनेटर में है वो पॉजिटिव या नेगेटिव डिसाइड करना है अभी
बट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए sec a plus tan a. RHS is sec a which is 1 by cos a, tan a which is sin a upon cos a. आपको आएगा 1 plus sin a upon cos a. Any doubt, students? No, sir. Now, if LHS is equal to RHS, implies mod cos A equal to cos A cos A has to be positive because mod cos A कब होता है? When cos A is positive, then only it will be equal. Then only it will come outside. Cos A has to be positive. If cos A is positive, A will be in either first quadrant or fourth quadrant. Cos is positive in दो quadrants. First quadrant में तो सब positive है. दूसरा fourth quadrant है. Go through it once and ask me. सर हाँ. तो क्या आप RHS वाले स्टेप से समझा सकते हो? अरे re-explaining. You always ask for re-explaining. What will I ask you now? I ask you कि नहीं like अरे छोड़ो, like I understand your problem. See, whenever you get disconnected from when I'm teaching, like, and you come back, means like I can understand concentration wise. You still try to ask me specifically, okay? That helps me to understand yours better rather than like plainly teaching again, because I will be saying the same statement again. Understood now? Okay. See, what is RHS is, RHS को मैंने sec a plus tan a था RHS में. Sec a को लिखा 1 upon cos a, tan a को लिखा sin a upon cos a. उसके बाद मैंने LCM ले लिया. हमें क्या मिल रहा था? 1 plus sin a upon cos a. जब LHS को सिंप्लीफाई किया हमें मिल रहा है ये चीज. When will RHS equal to LHS? Because क्वेश्चन में दिया है RHS equal to LHS. When will RHS equal to LHS? जब डिनोमिनेटर्स भी इक्वल है, न्यूमरेटर्स तो इक्वल है, डिनोमिनेटर्स भी इक्वल होनी चाहिए, मैंने इक्वेट कर दिया. When will mod cos A be cos A? When cos A is positive. When will cos A be positive? When A is in first quadrant or fourth quadrant. Okay. Understood now? Yeah. Any doubt, students? No, sir. Let's move ahead. If pi by 2 less than theta less than pi, find root of 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta plus root of 1 plus sin theta upon 1 minus sin theta. Solve it. Sir, would you explain how to do this sum? Which question? Sir, which you have written now. I will explain later. This also, let's everybody try now. I will explain this. Answer चाहिए students. Solve it. minus sec theta. Huh? Minus sec theta. Minus sec theta. It is supposed to be minus 2 sec theta. Minus 2 sec theta. हाँ. आपने sin
डिनोमिनेटर में sin थीटा का सिर्फ sin थीटा लिखे sin 2 थीटा लिखे सर जस्ट एक बार देखते हैं ना. I also want to see. See, I will rationalize the denominator. Check करते हैं, rationalize करते हैं denominator को. 1 minus sin theta whole square upon 1 minus sin square theta आएगा plus square root of 1 plus sin theta whole square upon 1 minus sin square theta आएगा rationalize करने से. Correct? See, this is square root of 1 minus sin theta whole square upon नीचे it is cos square theta. This is square root of 1 plus sin theta whole square upon cos square theta. And default numerators are positive. मैंने ऐड नहीं किया था. हाँ, नीचे mod cos theta आएगा. इधर भी न्यूमरेटर पॉजिटिव है, नीचे mod cos theta आएगा. करेक्ट ना? सो ऐड करने से क्या आएगा? नीचे mod cos theta ही है, 1 minus sin theta plus 1 plus sin theta. ये दोनों कट जाता है. सो 2 upon mod cos theta. बट ये कौन सा क्वाड्रेंट में है थीटा? See, all times you look at what is given here. Okay, this information is given for you to remove one extra answer or get one extra answer. Always that information is given for that particular purpose. Don't neglect that information. Okay, theta कौन से quadrant में है? Theta lies between 90 and 180. Second quadrant में. Second quadrant में cos is going to be negative. So आपका आंसर 2 upon minus cos theta आएगा. क्योंकि mod के अंदर cos नेगेटिव है. सो mod क्या करेगा? नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेगा. सो आपका आंसर है -2 sec थीटा. इसमें कोई डाउट है स्टूडेंट्स? नो सर. गो थ्रू करिए एक बार. वन मोर क्वेश्चन वी हैव टू डू. जस्ट वेट, डोंट गो. Done? Everybody done? Yes sir. Okay. Next question. If sin raised to 4 theta upon 2 plus cos raised to 4 theta upon 3 equal to 1 upon 5, find sin raised to 8 theta upon 8 plus cos raised to 8 theta upon 27. Okay? इसका वैल्यू ढूंढने का है. काफी नाइस क्वेश्चन है. हाउ डू वी डू इट? अब देखिएगा. So what will I do now? Sin raised to 4 theta upon 2 plus cos. See, cos raised to 4 को आप लिख सकते हैं cos square whole square. Cos square is 1 minus sin square whole square upon 3 equal to 1 by 5. Do you agree with this? Now sin square theta को मैं a ले लेता हूँ. Let sin square theta equal to a. आपको क्या आएगा? a square by 2 plus 1 minus a square whole square by 3 equal to 1 by 5. Correct, students? Sorry, a raised to 4, not a square. A raised to 4 by 2 plus 1 minus a square whole square upon 3 equal to 1 by 5. आप LCM ले लीजिए. हाँ. You had written it properly before. It was Yes, a square. you took sin square theta as a. Actually, yes, correct. Sorry. So a भी a है. A भी a है. करेक्ट ना? sin square theta को a लिया था. तो पहले वाला a square by 2 बनेगा. सेकंड वाला 1 minus a whole square by 3 बनेगा. करेक्ट ना? So LCM ले लेंगे. LCM लेने से क्या होगा? So X is the LCM. 3a square. Yeah, Aryan, tell me. So you have taken sin upon 4 theta as a or sin square theta as a. Sin square theta is a ना. मैंने बॉक्स भी लिखा. So while writing the sin 4 theta, you have written over there sin a square. Correct. So sir, I'm having a bit confusion over this a square upon 2 plus What is the minus. confusion? What is the confusion? So how did here is a square, whereas over here in bracket 1 minus a whole square.
ये क्या है? sin 4 theta. sin raised to 4 कैसे आएगा इससे? दोनों तरफ स्क्वायर करने से आएगा a स्क्वायर, करेक्ट ना? तो a स्क्वायर बन गया. इधर तो साइन स्क्वायर ही है, साइन स्क्वायर सीधा a रूट a, जो पिछले वाले में सब्स्टिट्यूट किया था. This I understood. Now I took LCM, so cross multiply 5 3s are 15, cross multiply 5 3s are 15 a square plus 10 into 1 minus a square equal to 6. Now 15 a square plus 10 into a square minus 2a plus 1 is equal to 6. So 10 a square plus 15 a square, 25 a square आएगा minus 20a plus 10 equal to 6. 25 a square minus 20a plus 4 equal to 0. 10 minus 6 is 4. अब ध्यान से देखेंगे ना, this is a perfect square. 5a minus 2 whole square. आपको 5a minus 2 0 बनेगा, a बनेगा 2 by 5. Any doubt students? No, sir. No, sir. a बनेगा 2 by 5. a is sin square theta. What is cos square theta? That is 1 minus sin square. 1 minus 2 by 5. 1 minus 2 by 5 which is 3 by 5. ये दोनों को ऐसे ही रखो. हमें क्या ढूंढने का है? हमें ढूंढने का है ए वैल्यू, which is nothing but sin square whole raised to 4 upon 8 plus cos square whole raised to 4 upon 27. Sin square is 2 by 5 upon 8. This is 3 by 5 whole raised to 4 upon 27. आपको क्या आएगा? 2 raised to 4 is 16 upon 8 into 5 raised to 4 is 625 plus 3 raised to 4 is 81 upon 27 into 625. 8 2s are 27 3s are, नीचे 625 है, न्यूमरेटर में 2 plus 3 5 है. 5 will get cancelled. Answer is 1 by 125. This is your answer. Any doubt? No, sir. All of you got it? People, all of you got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay. I'm ending the class, students. Bye. Bye, sir. And tomorrow my wait. Tomorrow my lectures are not there. Not only mine. I think all lectures are not there for you. Okay. Only exam is there. Bye, sir. Okay, sir. Okay. Thank you, sir.